Hello, students. Just a second. Hello, students, and welcome back to bankexamstudy.com. My name is Ramandeep Singh, and Bank of India Credit Officer notification is out. And today I'm going to discuss what you should study, right? See, students, I have taught for Bank of India Credit Officer in 2018 and in 2020. In 2021, कोई exam हुआ नहीं, right? As per my experience, I have made a list of topics, right? Proper exam analysis or the question asked, I have already provided on this channel. I'll provide the link in the description. You can just go through that. That would help you to frame your preparation strategy. तो एक बार उसको go through up कर लीजिए, right? फिर भी कुछ समझ ना आए तो my WhatsApp number is always there where you can actually ask your doubts. ठीक है? So I have sent all. Okay. So I can watch the live chats here. If there is any doubt in your mind regarding eligibility or anything, ask your doubts and I'm going to answer you. Okay. So what you should exactly study for professional knowledge and the general awareness. I'm not discussing about the English. Today I'm going to discuss about the professional knowledge and the general awareness with special reference to the banking industry. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड नॉट स्टडी, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए. आप बिल्कुल भी वो प्रिंटेड बुक्स मार्केट से लेकर ना पढ़ें, जो ऑल इन वन काइंड ऑफ बुक्स होती हैं वो ना पढ़ें. दैट इज नॉट रेलिवेंट, राइट? सो व्हाट इज बेसिकली रेलिवेंट इन द प्रोफेशनल नॉलेज? See students, I have mentioned a few schemes. Although there are like a lot of schemes, I'm going to teach like 30 plus schemes. But here I'm giving you a rough idea. The government schemes related to farmers, women empowerment, poverty alleviation, financial inclusion, education, MSMEs, exports, important. Mudra scheme, Kisan credit card, Jan Dhan Yojana, Atal pension Yojana, NPS scheme, PPF, all those schemes are actually Sukanya Samriddhi Yojana, also very important scheme. So ये सारी schemes बहुत बहुत important हैं. And you can see at least 5 to 7 questions directly from the government schemes or even maybe more than that. उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट स्कीम से. ओके, उससे भी ज़्यादा 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. एंड देन आरबीआई सर्कुलर्स. व्हेन आई से आरबीआई सर्कुलर, सी आरबीआई सर्कुलर्स फ्रॉम लास्ट 1 ईयर्स. सी स्टूडेंट, इसमें पूरी की पूरी बैंकिंग आ जाती है. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज देयर विच इज पार्ट ऑफ आरबीआई सर्कुलर्स ओनली, सॉरी, which is part of RBI circulars. And then guidelines related to housing finance companies, banks, urban cooperative banks, right? All that is part of the RBI circulars. RBI circulars में बहुत in-depth knowledge होती है, बहुत in-depth information होती है. And we cover that. RBI monitors the banking industry and they release various circulars for that. Every month there are 5, 6, 7 circulars. So देर आर हार्डली 80 to 90 सर्कुलर्स. 80 से 90 सर्कुलर्स होंगे पिछले एक साल के. नेक्स्ट 1-2 महीने के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मई जून के भी आएंगे, ठीक है, अप्रैल के भी आएंगे, 3 महीने के. सो देर वुड बी, इसको एडअप कर लीजिए, प्लस 30 कर दीजिए, तो 80, 90 प्लस 30, तो 110 से लेके 120 सर्कुलर्स हैं दैट यू नीड टू डू. देर आर फ्यू सर्कुलर्स विच आर वेरी लेंदी, जो आई गेस काफ़ी मास्टर सर्कुलर जो होते हैं काफ़ी लेंदी होते हैं. बट every month I do a 30 to 40 minute session followed by a circular session. So that would cover it up. 4 से 5 दिन पढ़ के भी आप पूरे के पूरे आरबीआई सर्कुलर्स कर सकते हो. रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया, सेबी, आरबीआई, नाबार्ड, एडा, ये सारे IRDA, तो ये सारे द हेड्स और गवर्नर, their head office or various offices, if they have opened any new office, आरबीआई मुद्रण का एक नया ऑफिस खोला है इंक प्रोडक्शन का, इट्स इम्पॉर्टेंट. ओके, बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट. यू आर नॉट सपोज टू गो रियली इन डेप्थ इन द कंपनीज एक्ट, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज एक्ट इज रिक्वायर्ड, राइट? लास्ट ईयर द क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द आईपीओ लिमिट्स, राइट? रिटेल इन्वेस्टर्स को कितना क्या कोटा है, बेसिक क्वेश्चंस, राइट? और ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग. यू शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग, नॉट इन डेप्थ, but basic understanding of Companies Act, basic understanding of Contract Act, basic understanding of negotiable instrument. Negotiable instrument चलो deep में पढ़ लो. Surface Act, it's a very short
बहुत शॉर्ट फॉर्म में है सरफाइसी, तो RBI FEMA भी बेसिक FIDAI है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. दीज एक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. RBI circular से what you can expect out of these 120 circulars, you can expect at least 25 to 30 questions. Yes, you heard it right. 25 से 30 questions. The full form asked in the exam, वो भी सर्कुलर्स में से ही होती हैं कि इसकी PSL की, इसकी पर्टिकुलर की फुल फॉर्म क्या है. तो इट्स डायरेक्टली फ्रॉम RBI सर्कुलर्स ओनली. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, लॉज भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है. देन स्टैटिक टॉपिक्स आर देयर व्हेन यू आर रीडिंग एन RBI सर्कुलर्स. ये सारी टर्म्स आती हैं, मॉर्गेजेस, लीन, लेटर ऑफ क्रेडिट, टाइप्स ऑफ लोन. पढ़ाते हुए RBI सर्कुलर मैं ये पढ़ा देता हूँ साथ में, ठीक है. बट एनी वे दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मॉर्गेजेस फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन एक बार आया था, इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है. इंग्लिश आप मेरे को बताना पढ़ के, इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है. बेसिकली इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है कि इफ़ आई वांट टू गेट अ लोन, मैं स्टार्टिंग में ही अपनी प्रॉपर्टी बैंक को दे देता हूँ, उसके नाम कर देता हूँ. जब मैं लोन वापस दे दूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे वापस आ जाएगी. दिस इज इंग्लिश मॉर्गेज. सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट दैट्स एन ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट topic, right? English mortgage, various types of liens, letter of credit, types of loans, banking products, derivative products, swaps, puts, options, very important. Okay. Basel norms, one or two questions from there. Financial management, you can expect at least 10 to 15 questions from the financial management. Capital budgeting, ratio analysis, cost of capital, capital structure, working capital management, cost, volume, profit analysis, the break-even point analysis. Okay. Calculation of EMI. Last year, I guess I haven't done that, but in the exams there were 3 questions from these EMI wala section. Calculation of EMI ये पिछले साल में आया था, उससे पिछले साल नहीं आया था. Depreciation. Every year there are 3 to 4 questions from depreciation only. The basic topic is there, but इसमें से आता है, ठीक है. सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो उसका ध्यान रखें प्रोफेशनल नॉलेज का. दिस इज द सिलेबस फॉर प्रोफेशनल नॉलेज. प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में एक फाइन सी लाइन है. प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन जनरल में भी आ जाते हैं, जनरल के क्वेश्चन प्रोफेशनल में आ जाते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन, ठीक है. मंथली फाइनेंशियल अवेयरनेस पब्लिश्ड बाय द बैंक एग्जाम्स टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट. सी स्टूडेंट्स, आई रियली डोंट नो कि अभी न्यूज़ में क्या आने वाला है नेक्स्ट मंथ, या क्या चल क्या रहा है बेसिकली फाइनेंशियल इंडस्ट्री में. दैट इज कवर्ड इन द कैप्सूल दैट वी पब्लिश. ओके. MOUs of banks with another financial institutions or anybody else out there. Okay. Growth numbers of banks, or the growth numbers of banks, growth numbers of the GDP numbers of India by various financial institutions. Union budget is actually very important for professional knowledge section as well as for the general awareness section. दोनों sections के लिए ये एक important point है, ठीक है. National parks, books in the news, important days, people in news, acquisitions, latest acquisitions like HDFC Bank, HDFC का अभी merge हो रही हैं. Basically HDFC Bank basically kind of acquire ही कर रहा है. Important committees, international organizations, popular marketing campaigns, their brand ambassadors, loan agreements के spelling गलत हैं, typos. India's rank in different indices, international reports, थोड़ी deep में पढ़ना है, reports, appointments, whatever the appointments that are in the news, whatever the days that are in the news, forecasted GDP awards, committees, product launches by banks, summits and conferences, states and their capitals, banking terms, joint military exercises, sports events, obituaries, cabinet ministries, countries and the capitals. वो simple आपका जो topics हैं, brand ambassadors, banks के headquarters. This is the basic syllabus, right? उतना ज़्यादा headache आप जितना सोच रहे हो उतना है नहीं है. Even in last years we did, I taught the same topics, the same kind of topics, right? Even this year, I have recorded a lot of quality sessions for RBI circulars, for the schemes, right? And while I knew that the exam is going to be held in these months, that is why I have already started working on this course from last 4 months. 4 महीने मेरे पास टाइम ही बहुत था, कुछ था नहीं करने को, तो I was working on this, right? So I have already done a lot of work. मैं काफ़ी सारे notes already बना चुका हूँ. So every month I do the RBI के circular के analysis, companies act और contract, ये सारा मैंने कर दिया हुआ है.
And yes, I do the live doubt clearing sessions as well. So first of all, I have the Bank of India Credit Officer course for this year. This is not PNB. This is BOI. Okay, BOI credit. Okay, we are providing video classes, the notes, the test series. Obviously, I'm actually working on the test series, latest test series. We are providing the systematic study plan and interview preparation guidance as part of the course, right? If there is any doubt in your mind, अगर आपके mind में कभी भी कोई doubts हैं तो 9067201000, this is my personal WhatsApp number. यहाँ पे आप एक message drop कर सकते हो where I'm going to answer your doubts. ठीक है अलवीरा, just drop me a WhatsApp message, okay? किसी को भी कुछ पर्सनल पूछना है आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो. यू कैन इवन कॉल मी, बट बिफोर कॉलिंग बिफोर प्लीज़ पिंग मी. आप पूछ लीजिए पहले, कई बार नहीं अवेलेबल होता, जैसे अभी कॉल आ गया. In 2020, all these students that took our courses, I know a lot of them personally, Ishmeet और Soham. These are the some students जिनकी stories बड़ी अच्छी थी, right? So they had a chat with me, and some of them they are my friends or WhatsApp पे, you know, उनके मैं status वगैरह देखता हूँ. So yes, all these students that took our courses in 2020 and they got their jobs as a credit officer, and 2 of them are credit analyst as well. We do for scale 1 credit officer and for scale 4 credit analyst. PNBSO credit officer, we did the course for them as well in 2021. All these students, they took our courses and they cracked their respective credit officer exams, marketing officer, scale 2, scale 3. All these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams, and I'm really really happy for them. And if there is any doubt in your mind, आप एक WhatsApp message drop कर दीजिए या call कर लीजिए. I'm going to answer your doubts. My name is Raman. And this is my personal WhatsApp number. And if there is any doubt regarding the eligibility, please ask your doubts. Let me just answer your doubts. कुछ भी eligibility को लेकर आपको doubt है तो आप मुझे contact कर सकते हैं. गुजराती वीरा, books are not available in the market. आप मार्केट से कोई बुक उठा के पढ़ेंगे तो बिल्कुल पास नहीं होंगे. दैट्स व्हाट आई कैन अश्योर यू. ये मैं अश्योर कर सकता हूँ. आरबीआई की वेबसाइट देख लीजिए, विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. बैंकिंग की बेस्ट इंफॉर्मेशन RBI.org पे अवेलेबल है. उससे बढ़िया बैंकिंग का कोई साइट अवेलेबल नहीं है. ग्रेजुएशन में 58% हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो मेरे हिसाब से. आप फिर भी नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, लेकिन ग्रेजुएशन में 60% चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड 55 चाहिए फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स. ओके, and that's I guess all for today, students. If there is any other doubt, post your comments or WhatsApp me, and like this video and share this video with your friends or subscribe